हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 11 और 12th के ग्रीन ओलंपियाड से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले भी हम एक वीडियो कर चुके हैं 50 क्वेश्चंस का। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप इन 50 क्वेश्चंस पर आइए। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके ग्रीन ओलंपियाड 2023 में। High GWP global warming potential gases trap substantially more heat than CO2 for a given amount of mass. The GWPs for these gases can be in the thousands or tens of thousands. Pick the high GWP gas form below. So which is the highest GWP gas? This is sulfur hexafluoride. Sulfur hexafluoride, this is the highest GWP global warming potential gas. Next question. Nearly one-third of Earth's land was covered by glacier during the Pleistocene ice age. However, today about 1/10 of the Earth's land is covered by glacial ice. 1/10 है जो अर्थ का वो ग्लेशियर से ढका हुआ है. Which ice sheet almost 3 kilometers 2 miles thick covered North America from the Canada Arctic all the way to modern US state of Missouri. Its glacial retreat actually created such features as the Great Lakes and the glaciers on Baffin Island, Canada. तो इसमें से बताना है कौन सी वो रेंज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द लाउरेंटाइड आइस शीट, that is related with US, Canada. Next question. Different greenhouse gases trap heat differently. In the sense, not all GHG trap the same amount of heat. This is referred to as global warming potential. CO2 by definition has a GWP of dash regardless of time period. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, has a GWP of 1 regardless of all time period uses. Next question. Methane is an extremely powerful greenhouse gas, GHG, greenhouse gas responsible for about 30% of warming since pre-industrial times. However, unlike CO2 which stays in the atmosphere for centuries, methane starts breaking down quickly, with most of it gone after a decade. This means cutting methane emission now can rapidly reduce the rate of warming in the near term. Is it true or false? This is totally false. Next question. Water vapor is the most abundant greenhouse gas, okay, in the atmosphere. However, human activities have a negligible direct influence on its atmospheric concentrations. It is surface warming caused by human production of other GHGs that leads to an increase in the atmospheric water vapors. This creates a positive negative loop in which warming leads to more warming. Is it true or false? This is totally false. This creates positive loop. नेक्स्ट क्वेश्चन. अलास्का आपने सुना होगा, ग्रीनलैंड एंड साइबेरिया आर सम ऑफ द फास्टेस्ट वार्मिंग रीजन ऑन द प्लेनेट. ये अभी इनमें क्या है, टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है क्योंकि पहले ठंडे रहते थे. दीज आर्कटिक एनवायरनमेंट्स आर हाईली सेंसिटिव टू इवन स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीजेज विच कैन मेल्ट सी आइस शीट्स एंड permafrost and lead to changes in the earth's reflectance. These are called as अल्बिडो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3-4 बार आ लिया पहले भी, तो आपको इसका पता होना चाहिए. ऑफ द वेस्ट टाइम मेंशन्ड बिलो विच वन वुड टेक द लॉन्गेस्ट टू डिग्रेड इन मैराइन एनवायरनमेंट. तो दिस इज प्लास्टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. माइक्रोप्लास्टिक्स आर सम प्लास्टिक pieces less than 5 mm long. They come from a variety of sources including larger plastic debris that degrades into smaller pieces over time. Name the types of microplastic that is added as exfoliants to health and beauty products such as cleaners and toothpaste. तो
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, माइक्रोबीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the location of the target area, two types of macro catchments water harvesting structures exist: wadi bed systems and off wadi system. Name the macro catchment system where indigenous high wall structure are built across relatively steep valleys in southern Tunisia. They are made of earth, stone or both, but always have a spillway, usually of stone. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद आप आंसर पर जाइए, क्वेश्चन को समझिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबली ग्राउंड वाटर प्रोवाइड अराउंड 50% ऑफ ऑल ड्रिंकिंग वाटर एंड 43% ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल इरिगेशन। तो ग्राउंड वाटर के लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है कि एक तो ये 50% ड्रिंकिंग वाटर है इसमें और 43% एग्रीकल्चरल इरिगेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीस्टोसीन एज फॉर्म्ड 1.8 मिलियन टू 10,000 years before. Permafrost contains a significant amount of organic material with an ice content of 50 to 90% by volume. Thawing of dash is a significant source of atmospheric methane. तो ये आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा येडोमा। येडोमा इज a significant source of atmospheric methane. Wildfire smoke can remain in the atmosphere for long period of time, depending on how long the fires burn. This is because the superheated smoke and ash that rise into the air can trigger what they can trigger. They trigger pyrocumulonimbus. Pyrocumulonimbus events or fire include induced thunderstorms that form at least 10 miles 16 kilometers above the ground in the stratosphere. Next question, the Central Pollution Control Board in India identifies a list of polluted cities in which the prescribed national ambient air quality standards are violated. These cities are identified based on ambient air quality data obtained under the National Air Quality Monitoring Program NAMP. What are these cities known? These cities are known as non-attainment cities. Non-attainment cities. Next question, in June-July 2019, temperatures around the world were some of the hottest on record and more than 100 wildfires occurred in the Arctic Circle. They emitted a record 244 megatons of CO2 and destroyed millions of hectares of forest across Siberia, Alaska, Greenland and Canada. What are these wildfires also known as? So these are known as zombie fires. Zombie fires. Next question, in January 2019, the NCAP was launched by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change. तो आपको इसका अब्रीवेशन लर्न करना चाहिए क्योंकि ये जरूर पूछा जाएगा, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड अब्रीवेशन है। That target 122 Indian cities to reduce particulate pollution by 20 to 30% by 2024 from 2017 levels. What is this program called? This program is called as National Clean Air Program. मतलब हवा को साफ करने के लिए इसमें कार्बन की मात्रा को इतना इतना घटा के हम चलेंगे और ये प्रोग्राम है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये क्वेश्चंस टेरी ने प्रोवाइड किए हैं जो इस ओलंपियाड को ऑर्गेनाइज कराता है, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो इसलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस बुकलेट के लिए आपसे 100 रुपीज़ लिया था। तो आई होप इसमें से बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आप खुद पढ़िए, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोपियन। These standards use the same yardstick as the European standards. Next question, dash are the cylinders of ice drilled from ice sheets and glaciers. They are essentially frozen time capsules that allow scientists to reconstruct climate far into the past, as their layers correspond to years and seasons, with the youngest ice at the top and the oldest ice at the bottom core. So, which are these cylinders? These are ice cores. These are called as ice cores. उसके बाद Captain Charles Murray of Al Galita Marine Research Foundation discovered plastic debris in North Pacific in 1997. Later, this patch was characterized as plastic smog. What is this patch known as? This patch is known as Great Pacific Garbage Patch. Which energy source from the below mentioned option doesn't produce carbon dioxide on burning? तो कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बर्न नहीं देगा, वो होगा यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर फ्यूल्स रिलीज एनर्जी थ्रू nuclear reactions induced fissions rather than through chemical reaction. In a nuclear power station, the energy released is used to boil water. The expanding steam spins turbines, which then drive generators to produce electricity. Which one of the following is a main nuclear fuel? तो इधर मेन न्यूक्लियर फ्यूल क्या हो जाएगा, सभी हैं ये। यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये नेचर में भी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियर फ्यूल्स के नाम से जाना जाता है। इनके लिए बहुत लड़ाई हो रही है आजकल। An object can store energy as a result of its position or shape that depends on weight and height. This stored energy of position is referred to पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी के आपके पढ़ा होगा आपने क्लास 12th में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड ऑप्शन दैट इज रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल का आपको पता होगा कौन से होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोमास, बट माइट नॉट ऑलवेज बी ग्रीन और क्लीन। आपको एग्जाम में इस ओलंपियाड में क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, तभी आंसर देना है जब आप उसका लैंग्वेज समझ जाएं। डैश ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोकार्बन सच एज पेट्रोलियम और नेचुरल गैस व्हेन हीटेड। तो इट्स करेक्ट आंसर इज केरोजेन। Nuclear fuels are non-renewable in case of any accident. A large amount of radioactive material could get released into the environment. Another issue with respect to fuel relates to dash, as it remains dangerously radioactive and harmful to health for thousands of years even later. So this is known as waste and storage. Wind power is an important source of energy generation, with global capacity reaching over 600 gigawatt in 2018. Dash is the world leader in wind energy with over a 1/3 of world's capacity. तो सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी कहाँ पर बनती है? चाइना में। It produces 1/3 of the world's capacity. Next question, this material is a nuclear reactor, doesn't contribute to power generation, but it is an integral part of fuel designs. It performs a number of very important functions, such as being an interface between fuel and coolant, enables neutrons to pass unhindered, resist the effect of radiation. Name this material that plays a critical role in containing nuclear fuel in reactor. Which is this? This is cladding or clad. Cladding or clad. Next question, which battery is most commonly used in cell phone and laptops? They have a high energy per unit mass relative to other electrical energy storage device. They also have a high power to weight ratio, high energy efficiency, good high temperature performance, and low
सेल्फ डिस्चार्ज। तो दिस बैटरीज आर नोन एज लिथियम आयन बैटरी। आपने देखा होगा सभी बैटरियां इसी की बनी होती हैं। अब 4-5 क्वेश्चन आप देख लीजिए, उनका आंसर लगाने का ट्राई कीजिए, मैं करेक्ट उसका आंसर बता देता हूँ 5-10 सेकंड बाद। इट्स करेक्ट आंसर इज सिलिकॉन। थर्मल एनर्जी बायो अक्मुलेशन its correct answer is pollination. These are credited to honey bees. Name the genetically controlled reproductive process wherein seed progeny are exact replicas of the mother plant. So its correct answer is A, apomixis. Solar plant is an ambitious advancement made in the field of renewable energy research. It is a step beyond silicon-based solar technology, which base is used in solar plants paint to produce energy. So its correct answer is nanoparticles. Next question, the science of soil-less gardening is called, this is called as hydroponics. हवा में खेती करना, हवा में पौधे उगाना। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे बहुत जगह पर बोतल में डाल के कुछ भी कैसे भी, जैसे पोटैटो, इसमें हाइड्रोपोनिक्स का एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं यूट्यूब में सर्च करके। IUCN का एब्रिविएशन आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, क्योंकि ये तो पूछा ही जाएगा। और ये क्या काम करता है, ये जो गायब होने की कगार पर जो एनिमल्स होते हैं उनकी देखभाल करने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडेंजर्ड, जो मतलब खतरे में है, अगले 10-15 सालों में आपको दिख नहीं पाएंगे, ऐसे एनिमल्स को ये पॉइंट आउट करता है और फिर उनको देखभाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 465, दिस इज द बैकबोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो इस बैकबोन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ इज कार्बन। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन नेचर के हर एलिमेंट में है, इसी की वजह से पुराने जो आइटम होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, उनकी एज का पता चलता है।
कार्बन डेटिंग जो एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से किसी भी चीज़ का मतलब एज पता चल जाएगा कितने साल पुराना है ये, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। द टर्म GM विच स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ GM का फुल फॉर्म पूछा गया है। दिस स्टैंड्स फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड, इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू रेफर टू क्रॉप प्लांट्स created by human using advanced molecular biology techniques. The coliform bacterial test is done to check the status of pollution in the water sample. It ascertains whether a water sample has microscopic organism usually found in our, correct answer is digestive system. This found in digestive system. Radio waves in the short wave band can be reflected or refracted from a layer of electrical charge atom in the atmosphere or called as, this is called as ionosphere, जिसमें रेडियोएक्टिव वेव्स होती हैं वो होता है आयनोस्फीयर। A rain shadow is a patch of land that has become a desert because mountain range block rainfall necessary for plant growth, while on the other side of the mountain cold, these are called windward side. The weather is wet and conducive for plant growth. Next question, dichloro-diphenyl trichloroethene is a colorless, tasteless and almost odorless crystalline chemical compound originally developed as an insecticide but became infamous for its environmental impact. What is it? It is known as DDT. Next question. Dash are plastic made from organic materials such as corn starch and often made up of polylactic acid. PLA has properties similar to polypropylene and polyethylene and look just like ordinary plastic. So this is a bioplastics. Toyota Glanza is a car combining two and more sources of power. In comparison to a standard vehicle, it emits fewer pollutants. This car falls under which of the following category? तो टोयोटा ग्लांजा ये कौन सी कैटेगरी की कार है? ये है हाइब्रिड कार। Fermentation occur under anaerobic condition. Which fuel can be produced by fermentation of sugarcane, sawdust, corn or wood chips? This is a alcohol. Next question, the koala bear is nocturnal tree-dwelling creature which feeds almost exclusively on the leaves of a few species of eucalyptus. To which family doesn't the koala bear actually belong? This belong to marsupial. And last question of this video, हमने इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस बात करने को बोला था। टॉप 50 का मतलब यहाँ ओनली 50 क्वेश्चन से नहीं है, आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कुछ सर्च करने की ज़रूरत है जिससे कि आप ग्रीन ओलंपियाड में अच्छा रैंक ले सकते हैं। अगर आप ओनली 125 क्वेश्चंस को लर्न करके ओलंपियाड देने जा रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। आपको इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड कम से कम 40-50 क्वेश्चंस और सर्च करने होंगे, तभी जाके आप इस ओलंपियाड में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। Dash is a low pressure area formed in the atmosphere in which winds spiral inwards. Nisarg was an example of these tropical features that had hit the coastal city of Mumbai in Maharashtra in June 2020. इसका क्या नाम था? इसका नाम था cyclone. This is a cyclone. Is a low pressure area formed in the atmosphere in which winds spiral inward. निसर्ग होता है एरिया वाइज नाम होता है, ये कहाँ कहाँ साइक्लोन आता है। तो कोई कंट्री हर बार कुछ ना कुछ नाम देती है जो साइक्लोन आता है, तो ये निसर्ग ये किसी देश ने नाम दिया था। हर साल हर बार जो साइक्लोन आता है हर बार कोई ना कोई कंट्री उसको एक नाम देती है, अपना मतलब देसी नाम बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये निसर्ग कहलाया था जो 2022 में मुंबई में आया था। तो स्टूडेंट्स ये था क्लास 11 और 12 दोनों के लिए ही टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ एग्ज़ाम में ऐसे कैसे देखने को मिलेगा। आप और भी अच्छे से इनको क्वेश्चंस पे सर्च कीजिए, थोड़ा पढ़िए, नोट्स बनाइए, तभी आप इसमें कुछ जीत सकते हैं।
आई होप आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।